So here the first thing is we are talking about Himalaya formation, right? So Himalaya formation एमिति नो कि एमिति कि नथिबो जे कि जानि नथिबो कि हिमालय फॉर्मेशन केमति हला. तो the first question, the formation of Himalaya happened because of continental and continental convergence. The statement is true or false? Formation of Himalaya happened through oceanic convergence. True or false? Please mention in the chat, right? I'm saying Himalaya formation oceanic convergence lagi hela. Is that true? Okay. False. Okay, no. Okay, false. Oceanic continental convergence. Oceanic and continental convergence. Okay, some are saying true, some are saying false. False or true? What it is? False. Continental convergence. Most people will say continental convergence. Correct? No. See, ऊपर को उठियो एमिति न कि से गुडा जोडा अछि ना सब वोल्कानो द्वारा आइजी. तो तुमको लागुची गोटे जो रेंजेस तयारी जेडा वोल्कानो द्वारा हम वोल्कानो ले गोटे जगह हबो ना सब पूरा ए मुंडरू नै कि पूरा ए सब तक एरिया रे वोल्कानो हबो कि बहुत रेयर. Correct? No. And volcano केतला हबो जेतले one plate has to be oceanic crust. Am I right? Yes, sir. Okay. So maybe say region here no पारे, but most probably the answer would be continent जदी converge हैला तो गोटे land तो uplift करिवो. Am I right? गोटे land तो uplift करिवो. So I will go morely with continent convergence rather than any oceanic or oceanic continent. Fine. Chalo. Now in Himalayan region, so we are having four things. One is called trans Himalayan. ओके तो ट्रांस हिमालय रे जदी तमे देखिबो तो गोटे त हमर आसी गला ट्रांस हिमालय जोटा के हम कहते ग्रेटर हिमालय रीजन और वी कॉल इट एज हिमाद्री. ओके देन ट्रांस परे देन आसुची ग्रेटर हिमालय. फर्स्ट होची गोटे होची ट्रांस हिमालय, देन गोटे होची ग्रेटर हिमालय, देन गोटे होची लेसर हिमालय आ गोटे होची शिवालिक. होप दिस फोर थिंग्स आर क्लियर. वन इज अ ट्रांस, वन इज ग्रेटर हिमालय, वन इज लेसर हिमालय, वन इज शिवालिक. एनी डाउट? चारटा हबो. First trans, then greater, bada, then lesser, then Shivalik. Fine. The next concept is related to कि भाई ये जो trans रे हमें कथा कहूचे, then there are certain regions also, right? तो regions कौन कौन ना गोटे होची काराकोरम, गोटे होची लद्दाख, आ गोटे होची जास्कर, आ गोटे होची कैलाश. कौन कौन कहली? First one is related to Karakoram. Then there will be one region is related to Ladakh range, Karakoram range, Ladakh range. Then there is a region near here, Kailash, and there is one something called Jaskar. Now this is in sequence, right? Karakoram, Ladakh, Jaskar, KLZ. KLMNOPQRSTUVWXYZ. So in sequence alphabetically. Karakoram sabutu top re, then Ladakh, then Jaskar. Any doubt? Haba? Haba na? Okay. So if you see the map, I mentioned this is A, so this is Karakoram, this is B, that's why this is Ladakh region, and this is D, that's what sorry, this is C, that's why it is called Jaskar. Then this is something related to Tibet, I can say. Now first of all कि बर्तमान काराकोरम रो जो रेंज अछि जोटा सबटु टॉप रे ऑक्साइड चीन वगैरह से याडे सब चलिबे. करेक्ट? नो. तो सेई जो काराकोरम सेथिरे केतटा माउंटेन अछली. माउंटेन नेम्स आर राकापोसी, केटू एंड गोसेब्रम. कोन कोन? राकापोसी, केटू एंड गोसेब्रम. हबो तो ए जो रेंज टा दिस इज तमरो एटा हे गला राकापोसी, दिस इज हे गला तमरो केटू एंड दिस इज हे गला गोसेब्रम. हबो ट्रांस रे तीनटा माउंटेन कहली गोटे होची राकापोसी, गोटे होची केटू आ गोटे होची गोसेब्रम. तो सबटु हाईएस्ट पीक एथिरे किए ना केटू. फाइन. ओके चलो नेक्स्ट आमे बर्तमान जिबा कि गोटे आ गोटे तो तिब्बत रीजन एटा तमरो कैलाश. ओके कैलाश से ट्रांस रे ही पळेबो तमरो. नेक्स्ट होची ग्रेटर हिमालय. एटा टिके कंफ्यूजिंग. तो कंफ्यूजिंग माने ताको स्टेट वाइज करिया पड़ो. तो फर्स्ट कथा होची ट्रांस, तो ताको तुमको स्टेट वाइज करिया नै, सीधा लद्दाख रे नियो तमे. लद्दाख आ कश्मीर रीजन वाला. तो फर्स्ट दिस इज
तमरो ट्रांस रे हमें कोन कोन कहले किए कहबो ट्रांस रे किए जाउछन सर राकापुसी केटू काराकोरम लद्दाख काराकोरम लद्दाख जस्कर जास्कर कैलाश okay so this is in Tibet so I don't go to focus much on this but Karakoram under रे तीनटा माउंटेन कोन कोन गोटा होची राकापुसी केटू विसलबम राकापुसी गास्तेरबम K2 and Goserblum so which is the highest peak K2 any doubt in trans okay fine trans is done now next is going to greater Himalaya so greater Himalaya it starts from Nanga Parbat and it will go till Namcha Varma right it will go till Namcha Varma जोटा होची अरुणाचल प्रदेश that means बाबा कि तमर जो सी फास्ट ट्रांस ता थिला ए ट्रांस रे तमर तीनटा पळे आसला करेक्ट नो काराकोरम लद्दाख जस्कर देन जो ग्रेटर हिमालय अछि सी पूरा एठू नै कि पूरा तमर कोठू ना जम्मू काश्मीर जोटा एठू जम्मू नंगा पर्वत जोटा अछि सेठू से नै कि से जीव कोठी नामचा बरवा जोटा कि अरुणाचल प्रदेश जाए देन एथिरे नेपाल रो अधा पहाड़ कंप्लीट हिजियो ठीक अछि कांचनजंगा वगैरह सिक्किम रो भी कवर हिजियो एथिरे तो सबुठु अधिक को पहाड़ आमे देखिबार अछि ना ग्रेटर हिमालय रे तो ग्रेटर हिमालय रे जदि तमे कांसेप्ट देखिबो ग्रेटर हिमालय फास्ट होची नंगा पर्वत ठीक अछि देन एटा तमे जम्मू काश्मीर रीजन नै गलो तापरे आसी जाउची कि भाई ता पर पोर्शनटा जोटा सेटा होची उत्तराखंड रो रीजन बिकॉज़ हिमाचल प्रदेश आडे आमे जाउ ही नै हिमाचल प्रदेश आउट टिके से पटो रहि गला ट्रांस रीजन आडो को बट आमे को रीजन को जाउची बर्तन उत्तराखंड रीजन को हिमाचल प्रदेश जाउ ही नै वेरी इंपोर्टेंट हिमाचल प्रदेश रे आमे कोनोसी कथार्ता करना आमे उत्तराखंड को जाउचे उत्तराखंड रो जदि तमे देखिबो कोन माउंटेन मोडा तो फास्ट गोटा होची कामेत तो एठी अछि कामेत कोन दाना कामेत मन रहइबो कामेत देन होची बंदरपुच टिके एपट को जदि मु आसीबी मते कोन मिलिबो बंदरपुच कामेत बंदरपुच हबो देन भाई बद्रीनाथ नंदा देवी त्रिशूल डन मते कुह उत्तराखंड रो कामेत बंदरपुच बद्रीनाथ नंदा देवी त्रिशूल फास्ट तो बद्रीनाथ नंदा देवी त्रिशूल दिस इज वेरी क्लियर बहुत सिंपल ए तीनटा तो मन रहि जबो आराम से उत्तराखंड बद्रीनाथ नंदा देवी त्रिशूल ठीक अछि आ बाकी रहला कामेत आ बंदरपुच हबना हबनी ए नावडा तो मन रखियो पड़ियो बिकॉज़ बंदरपुच वगैरह अगेन रिवर सिस्टम जेतले को आबो सेतले तार ओरिजिन भी बाहरियो बंदरपुच वगैरह रोड गोटे रिवर बाहरला सी आसी की जाय की अलकानंदा सहित मिसला देन देवप्रयाग वगैरह बनिला कर्णप्रयाग बनिला विष्णुप्रयाग बनिला ये सब कांसेप्ट सेतले बाजियो जेतले तमे एटलीस्ट ना ओडारे सहित फैमिलियर दियो कि भाई ओके बंदरपुच उत्तराखंड रे ही अछि दैट मींस ए जो नदीर सोर्स सेटा उत्तराखंड रु ही बाहरुची बुझियला ना बुझियला okay okay so uttarakhand I'm audible right okay so uttarakhand ru बर्तन हमें पांचटा पढी देले जोटा कि हमर ग्रेटर हिमालय रे जदि मु टिके तळु को खसिबी देन भाई मते मिलिबो उत्तराखंड पर मते आ यूपी को आसीबार नै यूपी रे मते कोनोसी माउंटेन मिलिबोनी बिकॉज़ दैट इज ए प्लेन एरिया राइट तो मु जिबी कोठी की ना नेक्स्ट होची मोर नेपाल रीजन तो नेपाल रीजन रो मन रखियार अछि काली जेमति हमें पासेस रे मन रखुतले मैक आ एलसीआई सिमिलरली एठी भी गोटे कोड करबा कोन ना डैम डीएएम डीएएम डैम देन जेम जीईएम ठीक अछि कोन मन रखियार अछि डैम आउ जेम नाउ डी फॉर दौलागिरी कोन डी फॉर दौलागिरी ए फॉर अन्नपूर्णा एम फॉर मानसालू ओके Mansalu. Okay, Mansalu. Yes, that is Mansalu. Then DAM. One is the Daulagiri, A for Annapurna, M for Mansalu. That's the. Then ta mojire between dam and gem. Ta mojire what asila kono na Sisa Pangama jota Tibet region रे अछि कोन अछि ना कोन दाना Sisa Pangama. Then G for Gauri Shankar, E for Everest, M for Makalu. So ऊपर अछि Mansalu, तळे अछि Makalu. ऊपर अछि मनसालू तळे अछि मकालू मकालू इज नियर टू सिक्किम मनसालू इज नियर टू उत्तराखंड इज दैट क्लियर okay I will do the mapping don't worry first of all I am just telling all the names so dam मझिरे रहला सीसापगमा जेम नाउ ए जो जेम ता मझिरे गोटे गोटे अछि जी आउ ई मझिरे चोयो एंड ई आउ एम मझिरे लोथसे जी आउ ई मझिरे चोयो एंड ई आउ एम मझिरे लोथसे एति की तो हबो ओके मकालू देन सिक्किम को पळे आसी मु नेक्स्ट
आसाम पर कौन आस सिक्किम ना सॉरी नॉट आसाम दैट इज नेपाल नेपाल पर सिक्किम तो सिक्किम रे होची कांचनजंगा सिक्किम रे तो जदी कुहाबो कि भाई केटू आउ कांचनजंगा जदी इंडिया रा किए बहुत भलो तो आज ए इंडिया मु मानुची कि काश्मीर आज ए होल पार्ट ऑफ इंडिया तो मु कहबी कि भाई केटू होची सबटु बड़ किंतु जदी किए कहबो कि नै नै केटूटा जो रीजन रे अछि ऑक्साइड चेन रीजन रे अछि सेटा आमे मानु ही नै इंडिया रे देन मु कहबी कि ठीक अछि देन आई विल गो फॉर कांचनजंगा दिस इज द डिफरेंस इंडिया रा सबटु बड़ पर्वत आइदर आई विल से K2 or if I will say K2 is in Akshay Chin and which is not part of India, then I will say Kanchenjunga. Is that clear? Based on the question, you have to mark. कि यदि K2 अच्छी, then you mark it as K2, और यदि K2 नहीं, then Kanchenjunga. Then done. Now the next is Arunachal Pradesh रा दीटा गोटे होची कांगटो. See, Kamet is in Uttarakhand. Kangto it is in Arunachal Pradesh and Namcha. These are great Himalayas. Done. Now I told about one called Trans Himalaya. Let's map the Trans Himalaya. So Trans Himalaya, this is one part, this is one part, this is one part, and this is one part. Now I'm pointing, this is A, this is B, this is C, this is D. In a message, please try to tell me if I will say Ladakh region, which will be the Ladakh range. A, B, C, D, which one it will be? I'm saying B. Okay, very nice. If I will ask, there is a mountain called Goserbrum. It belongs to which range? Whether A, B, C, D. Goserbrum is near to which range? Goserbrum. Okay, I'm marking that point also. This is somewhere Goserbrum. This is somewhere K2. And this is somewhere your Rakaposi. Okay, so I'm putting one more point. 1, 2, 3. So the next question is Kailas, which in Tibet. For that, what I have to mark? A, B, C, D. Okay, fine, very nice. Now the next is, if I'll talk about key, there is a point which is somewhere near to A, and it is highest mountain peak. So what is the name of that mountain peak? And what is the between 1 to 3? What is that point? Highest mountain peak between 1 to 3. What is that point? Is it 1? Rakaposi. 1 is Rakaposi. 2 is K2, right? Godwin Austen K2. Yes, Godwin Austen K2. Okay, so that is 2. 1 is Rakaposi, 2 is K2, 3 is Gosebro. So it is clear, right? So trans is done. Trans is done. Next is talking about Greater Himalayas. So Greater Himalayas will go like this. Okay, now there is one point here. There is one point here. There are a few points here, 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 here. Then there are few points 1, 2, 3, 4. This 4 is somewhere here. 5, 6, 7, 8, 9. Then this is Sikkim, right? So 1 point here, then 1 point somewhere here, and 1 point somewhere here. Okay, let me write it. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18টা ଅଛି କୋଠି Greater Himalaya. Now it is becoming little challenging, right? At least ମୁଁ state କହୁଛି, this state you can denote as A, this state you can denote as B. For Assam, sorry, for Nepal you can denote as C, for Sikkim you can denote as D. Okay, and for Arunachal Pradesh you can denote as E. Simple. First question, ki there is a mountain whose name is called Kangto, that belongs to which state? Based on ABCD, you mark as ABCD. Kangto. Okay, I'm saying D and E. Major it is E. Okay, what is the digit for it? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. What do you think? 18, 17, 17, 18, 17, 18.
This is 18, not 18. This is 17. Because we told no, Greater Himalaya, it starts from what? Nanga Parbat to Namcha Barwa. So already आमे पढ़िथिले अरुणाचल प्रदेश रे दीटा पहाड़, करेक्ट नो? तो दीटा पहाड़ रु गोटे तो होची कांगटो आ गोटे होची नामचा बर्मा. तो जदि नामचा बर्मा लास्ट मुंड रे ही रहइबो 18 नंबर रे, देन 17 नंबर टा की हबो? ऑब्वियसली कांगटो. एनी डाउट? 17, correct? Okay, answer is 70. Now the next question is, there is a mountain that's name is called Bandarpuch. Which state? A B C D E. Bandarpuch, Bandarpuch. Okay. Now you tell me, if I will travel from Daulagiri to Everest. Daulagiri to Everest. Now tell me, this Daulagiri and Everest, it belongs to which nation or state? Between A, B, C, D, who position में मुझे मारी? Daulagiri, Daulagiri, Everest. सब तो पढ़े ऐसे मोर कोतरे ना सी रे. Okay, let's try to name it. Otherwise it will be too much lengthy, like too much extension. कि एकटा कौन ना कहो जल्दी. एकटा नंगा पर्वत, राइट? होना नहीं. Okay, what is this two? दुईटा कौन? दुईटा दुईटा दुई नंबर कामेत. कामेत. 3 नंबर चले कौन? 3 नंबर होची कामेत, 2 नंबर होची बंदरपुच. ओके, 2 नंबर इज बंदरपुच, 3 नंबर होची कामेत. व्हाट अबाउट 4? बद्रीनाथ. ओके, बद्रीनाथ. व्हाट अबाउट 5? नंदा देवी. नंदा देवी. नंदा देवी. व्हाट अबाउट 6? त्रिशूल. त्रिशूल. व्हाट अबाउट 7? धौलीगिरी. धौलीगिरी नो, दौलागिरी. दौलागिरी. धौलागिरी. ओके, 8? सर अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा. 9? मानसून. मनशालो. 10? सीसापग्न. सीसापग्मा. वेरी नाइस. 11? सर गौरी शंकर. गौरी शंकर. 12? चोयुयु. चोयो. 13? एवरेस्ट. 14? लोत्से. लोत्से. 15? मकालू. मकालो. 16? कांचनजंगा. 17? कांगतो. 18? नामचगरो. मतलब बहुत सारा डाउट अछि ग्रेटर हिमालय. सर काली जदि बंदरपुच आसियो देन मु मारिबि सियाडे नीलगिरी आडे मारिबो कि? बंदरपुच उत्तराखंड. सर बंदरपुच आसिले मु हिमाचल प्रदेश भी मारिबि. हिमाचल प्रदेश भाई कथा ही उठुनी. हिमाचल प्रदेश रा हमर कोनोसी पहाड़ पर्वत कथा कहूनी नै. ठीक अछि? होप इट इज क्लियर. ग्रेटर हिमालय इज डन. नेक्स्ट इज पीर पंजाल रेंज. तो जनरली बर्तन तो को coming to Jaskar range and Pir Panjal range, which comes in Trans Himalaya? सर जास्कर. Jaskar comes in Trans Himalaya. Then Jaskar तळु को मुझे देसी मते कोन मिलिबो? पीर पंजाल रेंज. तो पीर पंजाल रेंज जोटा को हमें कहउछे लेसर हिमालय. सी फास्ट तो कहउछी हिमालय रो क्लासिफिकेशन. आगो कहले ट्रांस, देन हमें कोन कहले ग्रेटर हिमालय, देन हमें कहउछे लेसर हिमालय, देन आसीबो शिवालिक. am I right? तो ए ट्रांस रे ही आसी वाला तीनटा रेंज कौन कौन? काराकोरम, लादाख एंड जास्कर. देन ग्रेटर हिमालय वाला कांसेप्ट गला. देन एठी लेसर हिमालय रे आको हमें कोन कहउछे? पीर पिंजल. पीर पंजाल. ओके, पीर पंजाल हबो. जास्कर आ पीर पंजाल भीतर डिफरेंस तो एती जणा पड़ला ना कि भाई गोटे ग्रेटर रे आसी, गोटे लेसर रे आसी. सॉरी, गोटे ट्रांस रे आसी, गोटे लेसर रे आसी. ग्रेटर रे भी आसुनी. होप इट इज क्लियर, राइट? सो पीर पिंजाल रेंज जोटा कि हमें कहउछे लेसर हिमालय रा पार्ट. तो सेथिरे कोन अछि ना गोटे होछि द फर्स्ट पीर पंजाल. दिस इज पीर पंजाल. देन ता तळु को अछि दौलाधर. Daulagiri is different and Dauladhar is different. Okay, Dauladhar that is in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. तो बर्तन जदि पीर पंजाल, this is a range, not a mountain only, single mountain, but it is a range. तो पीर पंजाल रेंज तार एक्सटेंशन कोड ना जम्मू काश्मीर रो नेकी हिमाचल प्रदेश. सी हिमाचल प्रदेश रे हमें ग्रेटर हिमालय कथा कोने, हिमाचल प्रदेश रे हमें कोन कहउछे? लेसर हिमालय कथा. कोन ना पीर पंजाल तापर आसी धौलागिरी. होप इट इज क्लियर, राइट? देन उत्तराखंड को मुझे तळे आसीबी कामेत, बंदरपुच, नंदा देवी, बद्रीनाथ, त्रिशूल सेगुडा तो सब ग्रेटर हिमालय रे गला. व्हाट अबाउट ता तळु को कोन अछि? ता तळु को अछि नागतिब्बा.
then Mussoorie, then Kumaun, Nagatibba, Mussoorie, Kumaun. हबो नागतिब्बा मशूरी त्रिशूल वाला ना त्रिशूल पर भाई नाग आसीबे करेक्ट नो बिकॉज़ शिव ना तो नंदा देवी बद्रीनाथ ये सब कहानी से होला पर त्रिशूल तापरे आसीबे नाग नागतिब्बा करेक्ट एंड मशूरी लावासना देन तमरा गोटे आसीगला कोन कुमायून कुमायून मशूरी मझिरे रहला कुमायून एपटे नागतिब्बा एपटे देन महाभारत रेंज नेपाल दैट्स इट पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालय आई नो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी और जो माने फर्स्ट टाइम करथु ताका पय टिके टाइम लागुथबो बट बिलीव मी यू हैव टू बियर विथ इट आर आउ किछि रेंज नै माने नल तमे बही धर बही रे दी तीनटा खाली वर्ड सुनिबो देन ताकू मैपिंग करियला बेलू कष्ट हिजो राइट सो सिंपल जिंस पीर पंजाल दौलाधर डन देन उत्तराखंड को मुझे तळे आसीबी त्रिशूल तो ऑलरेडी पढि देछि त्रिशूल पर नाग आसीबी सो नाग तिब्बा देन मशूरी देन आउट रहला कुमायून डन देन जेतले मु उत्तराखंड रो यूपी को तो मुझे बारी नै यूपी तो मतलब प्लेन एरिया उत्तराखंड रो जदि मु नेपाल को जिबी मते मिलिबो महाभारत रेंज ठीक अछि देन दिस इज द पीर पंजाल डन लास्ट इज शिवालिक रे बहुत छोट छोट से सेपट लाइन टा पळा आसीबो को पट्टा जोटा हमें कहले एपट एरियाटा शिवालिक रीजन रे जिवो ए रीजन टा शिवालिक पूरा लेसर हिमालय करेक्ट दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज लेसर हिमालय शिवालिक तो एथिरे मते अरुणाचल प्रदेश पढिबार अछि मते एथिरे आसाम पढिबार अछि नागालैंड पढिबार अछि मणिपुर पढिबार अछि मिजोरम पढिबार अछि त्रिपुरा पढिबार अछि मेघालय पढिबार अछि ए सब होती मोर लेसर हिमालय रे जिवो होप इट इज क्लियर ठीक अछि चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज ग्रेट हिमालय करेक्ट वर्तमान लेसर हिमालय को जिबा तो लेसर हिमालय रे मते कौन कौन मिलुथिला कि लेसर हिमालय रे इफ यू विल सी वी हैव पीर पंजाल दौलाधर हबो ओके देन वी हैव नाग तिब्बा मशूरी कुमायून देन महाभारत रेंज डन एनी डाउट पीर पंजाल दौलाधर नाग तिब्बा मशूरी Humayun Mahabharat range. I'm just donating it as some other form A, B, C, D, E, F. Now you tell me what you have to write for Mashuri. Sir, D. Okay. What you have to write for Mahabharat range? F. What you have to write for Dauladhar? Sir, B. What you have to write for Nagatibba? C. What do you have to write for Pir Panjal? A. What do you have to write for Kumayu? E. Okay, done. Any doubt? Okay, let's try to combine. For trans, I am using this, right? For Greater Himalaya, I am using pink color. जो डॉट बनाऊे so this point is in between. Okay, chalo. Okay, this is for what I did is Greater Himalaya. Then for Lesser Himalaya, I am using a different color. So I will use black. Okay, for this is Greater Himalaya, right? This is trans. This is Greater Himalaya. I'm mentioning Greater Himalaya. This is I am mentioning for trans, and now I am doing for Lesser Himalaya. Okay, so Bhavina, some are here. These are two lines. Then one, two, three lines, and one line is here.
Any doubt? Any doubt between Trans, Greater Himalaya and Lesser Himalaya? ଜଣା ପଡୁଛି ନା କି କୋଉଟା ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟ ଯାଉଛି, କୋଉଟା ଲେସର ହିମାଳୟ ଯାଉଛି, କୋଉଟା ଟ୍ରାନ୍ସ ଯାଉଛି. Now my question is first point. Which one is correct? 1, 2, 3, 4. Please note it. I wrote first one is Kumaun, Trans Himalaya, Jaskar, Lesser Himalaya, Dauladhar, Sibalik, Everest, Greater Himalaya. 4 is right. Okay. So you understood how to make questions, right? कि जस्ट तमे एमिति नय खाली जस्ट घोषित होबी मो स्टेट वाइज देन क्वेश्चन जेतले आसी जिवो देन तारो इंटरलिंक कर परने हरियाण ना. ओके नाउ यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स करेक्ट इट. कुमायून आ पई कोन मो मारिबी ट्रांस ग्रेटर लेसर. Lesser, sir. Lesser. लेसर. All is it lesser or anyone is deviating from any answer? Kumaun lesser. Fine, very nice. What about Jaskar? Where I have to mark it? Trans. Others? Shall I mark it as in trans? Okay, very nice. Dauladhar? Lesser. Lesser. Okay. Everest, that is anyway, it is in correct positions, right? Any doubt? Trans, Greater Himalaya, Lesser Himalaya. Before going to Sibalik, any doubt? At least Uttarakhand, very clear. Ki bhai, there is Nagatibba, which in Lesser Himalaya. There is Trishul, which in Greater Himalaya. होंगे नहीं? There is Pir Panjal range and Dauladhar, which are in Lesser Himalaya, but there is Daulagiri, correct? No, Daulagiri, which is in Greater. Greater Himalaya. Dauladhar is in Lesser Himalaya, but Daulagiri is in Greater Himalaya, and it is in Nepal. While Dauladhar, it is in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. चलो एतिकी तो हबो हबो ना हबनी. Okay, fine. Next we will try to move to Sibalik region, and हमको बर्तमान Sibalik region रो तो धीरे धीरे ता स्टार्ट करिया पड़े पुनी पेनिनसुला पार्ट को आसी कि मध्य प्रदेश रे कोन पहाड़ अछि, ओडिसा रे कोन पहाड़ अछि, आंध्र रे कोन पहाड़ अछि. सी पहाड़ is little tricky in the sense if you will do 2 to 3 times revision then it will be on your tips, right? Otherwise it will be little bit tough. At least जेटा जोटा मेजर पोर्शन थिला जोथरे कंफ्यूजन हेई पारे ट्रांस लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय आउ सिबालिक भितरे तो सिबालिक पोर्शन टाको तो मु छाडी देली. सिबालिक तमे बर्तन भाबो कि भाई मते से उत्तराखंड को आउ जिबार नाही. डन, उत्तराखंड इज डन. ऊपर मु 5टा पढिली जोटा ग्रेटर हिमालय रे, तळे मु 3टा पढिली जोटा लेसर हिमालय रे. काली जदी क्वेश्चन आसला मसूरी इट बिलोंग्स टू ट्रांस or it belongs to lesser Himalaya or greater Himalaya or Sibalik, where you will connect Mussoorie. Yes, sir. Lesser Himalaya, everyone. Okay, very nice. Chalo. Next is we will go to Arunachal Pradesh. बर्तन आमे पढुचे को रीजन ना शिवालिक रे, राइट? शिवालिक रे आमे कहूचे अरुणाचल प्रदेश रे. ऑलरेडी आमे कांगटो आ गोटे एप्टे होचे नामचा बरवा. याकू ऑलरेडी आमे ग्रेटर हिमालय रे सार देसे. देन आउ चारिटा डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी. कोन डाफला, there is a Dafla, Miri, Abor, Mismi. Dafla, Miri, Abor, Mismi. Dafla, Miri, Abor, Mismi. M1, M2. So Dafla, M1, M2, and Dafla, Miri, Abor. Dabor तो मने रहेगा ना डाबर ना मने रहेगा डाबर ही मने रहेगा सर डाबर वाला टूथपेस्ट. So Dafla, one is Abor, Dabur, and M1, M2, Miri and Mismi. Done. Any doubt? Arunachal Pradesh.
अरुणाचल प्रदेश रे डाबर मिरी मिस्मी सो डाफला मिरी आबर मिस्मी डन एंड कांगटो आ गोटे हला नामचबरमा ऑल पहाड़ास गॉन देन नागालैंड को जदि मु आसीबी नागा हिल्स भाई बहुत कष्ट नागालैंड रे नागा हिल्स आडो ना ही मन रहबनी नागा हिल केते थर घोसिया पड़ुची एमती सिचुएशन अछि कि नागा हिल्स करेक्ट वेरी सिंपल नागा हिल्स देन नागालैंड रो जदि हाईएस्ट पीक को हाव व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड सारामती कोन ता ना सारामती नागालैंड रो हाईएस्ट पीक रो ना होची सारामती देन इफ आई गो टू मणिपुर माउंट इसो माउंट इसो highest peak that is called tempo parvat this is the mount isoro highest peak is called tempo and एठी आ गोटे अछि माउंट इसो सहित आ गोटे कोन अछि लाइमाटो माउंट इसो एंड लाइमाटो कोठी ना मोर अछि सेटा मणिपुर रे नागालैंड रे नागा हिल्स मणिपुर रे माउंट इसो एंड लाइमाटो खबर ओके नमामि नागालैंड मणिपुर मिजोरम नमामि गंगे नमामि नागालैंड मणिपुर मिजोरम नागालैंड नागा हिल्स सारामती होची हाईएस्ट पीक मणिपुर रे मोर होची माउंट इसो जो थरे हमें कहूचे टेम्पो पर्वत हाईएस्ट पीक देन माउंट इसो पर आउट होची तमर माउंट लाइमाटो नेक्स्ट मिजोरम रे होची मिजो हिल्स जेमती नागालैंड रे नागा हिल्स सेमती मिजोरम रे मिजो हिल्स आ गोटे थिला ब्लू माउंटेन ठीक अछि ताको ब्लू माउंटेन आ गोटे कोन ना तार ना फांकुई जोटा होची तार हाईएस्ट पीक फांकुई सो गोटे लुसाई पड़िबो आ गोटे फांकुई पड़िबो लुसाई एंड फांकुई सो मिजोरम रे गोटे होची तो मिजो आ गोटे होची फांकुई जोटा होची ब्लू माउंटेन रे हाईएस्ट पीक देन फांकुई रीजन सेटा आ गोटे होची लुसाई गोटे होची लाइमाटो और लुसाई ये भीतर डिफरेंस एटलीस्ट जणा था कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइमाटो एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लुसाई दैट्स इट हबो नागा माउंट इसो लाइमाटो मिजो फांकुई लुसाई ठीक अछि देन त्रिपुरा रे होची बेटलिंग सीब डन त्रिपुरा इज आल्सो डन बेटलिंग सीब आसाम को मु जतले जिबी अगेन मते कोन सी मिरी मिस्मी सेटा मु अरुणाचल रे पढितली एठी कोन पढि मिकिर देयर इज द रेंगमा पटकाईबूम एंड बराली रेंज सो देयर इज समथिंग कॉल्ड पटकाईबूम क्वेश्चन एज यूपीएससी रे आस्तला पटकाईबूम इट इज पार्ट ऑफ 3 स्टेट्स कोन ना अरुणाचल प्रदेश आसाम और नागालैंड तो ऊपर पर्सन ता जति मु कहिबी तो बर्तन मु एटा लिखि दउची ठीक अछि एगुडा तो क्लियर ना ना कार डाउट अछि ट्रांस और ग्रेटर और लेसर रे ओके नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट इज वी आर कमिंग टू अरुणाचल प्रदेश तो लेट्स मैप इट तो एठी तो ऑलरेडी हम कांगटो पढितला ने एठी नामचारमा पढितला जोटा कि हमर ग्रेटर रे आस्तला ना लेसर रे आस्तला सर ग्रेटर तो बर्तन शिवालिक रीजन रे मु चारटा कहली डाबर आ गोटे होची M1 M2 करेक्ट नो डाफला मिरी आबर मिस्मी एनी डाउट ओके देन अरुणाचल प्रदेश पळे आसला परे तापर आसी नमामि नागालैंड मणिपुर मिजोरम नागालैंड रे हम गोटे कहथिले नागा हिल्स रे हाईएस्ट कोन थिला हाईएस्ट पीक सारामती वेरी नाइस दिस इज डन नाउ जदि मु कहबी मणिपुर गोटे थिला माउंट इशो आ गोटे माउंट लाइमाटो लाइम एंड इसोर सब हाईएस्ट पीक टेम्पो पर्वत ओके देन जदि मु मिजोरम को आसीबी मते मिलियो मिजो हिल देन गोटे ब्लू माउंटेन तार हाईएस्ट पीक होची तमरा फांकुई देन लुसाई ठीक अछि जदि मु त्रिपुरा को आसीबी मते कोन मिलला बेटलिंग सीब सीब okay done now patkaibum so patkaibum it is a range which is connecting to these three area तो ए तीनटा एरिया मते को ए तीनटा एरिया कोन कोन ना गोटे होची आसाम गोटे एपटे तो होची आसाम एपटे होची अरुणाचल प्रदेश आ एपटे होची नागालैंड बुझिला नै पटकाईबूम कोठी अछि ओके देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बराली रेंज तो बराली रेंज होची इफ तळ पोर्शन तळर ट्राई जंक्शन कोन ना एथरे के आसीबो आसाम एपटे आसीबो तमरो नागालैंड एपटे आसीबो तमरो मणिपुर हबो ठीक अछि आ आसाम रे दीटा मिकिर और रेंगमा डन मिकिर आ गोटे होची रेंगमा मते को एई तक पोर्शन रे किछि कष्ट लागिला कि जदी लागिला ताको आउ थरे देखो
যদি কালি কোশ্চেন আসিলা লুসাই it part of Nagaland, is that correct? Lusai, Mizoram. Mizoram. যদি কালি কোশ্চেন আসলা মিকির is a part of Arunachal Pradesh. Assam, sir. Assam. Abor part of Tripura. Arunachal Pradesh. Kangto part of Uttarakhand. এতে কি হবো? Okay, let's do a question. HP for Himachal Pradesh. Okay. Okay, so I'll just dictate what I have wrote. First one I wrote Mikir, that is I am saying Assam. Then Kamet, Himachal Pradesh. Mansalu, Assam. Isho, Tripura. Fangkui, Manipur. Naga Hills, Nagaland. Rakaposi, Uttarakhand. Nagatibba, Nagaland. Abor, Assam. Barali Range, Arunachal Pradesh. How many of them are wrong? Out of 10. Take 2 minutes. It's 10:31. Please mention in the chat box. Meantime, I will take some water. Okay, done. Two right. I asked only wrong. How many are wrong? Two right, one six wrong. That doesn't make a sense. How many are wrong? Two wrong, three wrong, four wrong, five wrong, six wrong, 10 wrong, all 10 wrong. Okay. Okay, let's discuss. We'll map it. Mikir Assam, is that correct? Yes. This is correct. Kamet is in Himachal Pradesh. Is that correct? Uttarakhand, sir. This is wrong, right? This is wrong. So it is related to Uttarakhand and it is in lesser or greater? Greater, sir. Very nice. Now Mansalu, it is in Assam. Nepal. It is in Nepal.
Greater, lesser, trans, what it is? Greater. Greater. Very nice. Isho, it is in Tripura. Manipur, sir. Okay. Sibalik, right? This is wrong. Fangkui, Manipur. Mizoram, sir. Okay. Naga Hill, Nagaland. Yes, sir. Rakaposi, Uttarakhand. Nice, sir. I will say Jammu Kashmir, right? Okay. Nagatibba, Nagaland. Sir, Uttarakhand. Uttarakhand. Greater or lesser? Lesser, sir. Abor, Assam. Arunachal Pradesh. Barali Range, Arunachal Pradesh. सर बराली रेंज रे सर चारटा स्टेट को कनेक्ट कर But Arunachal Pradesh को connect करती ना करोगे? नहीं सर कर रहे Then wrong, no? Then Barali Range को तीनटा state, basically तीनटा state को just चारटा. आसाम मेघालय या मणिपुर रहिला और नागालैंड अच्छा मेघालय कनेक्ट करछी तो मु एटा मो खाता रे तो लिखिनी मते टिके देखिया पड़ियो जो मेघालय कवर करतो दैट इज आल्सो फाइन बट अरुणाचल प्रदेश तो करूनी करेक्ट नो बिकॉज़ एटा तळे अछि करेक्ट बराली रेंज एठी दिस इज व्हिच रेंज पटकाई बूम करेक्ट नो ऊपर जोडा अछि पटकाई बूम तळे अछि तमरो बराली रेंज तो एटा कवर करछी कोन तमरो जनरली आसाम देन नागालैंड plus Manipur and I didn't study but if you are saying Meghalaya I have to verify Meghalaya okay this I have to verify but at least these three I sure right okay so the answer is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 are wrong is that clear those who have said 8 that is very nice so you at least know all the mountain ranges now coming to the question is there any question that we already discussed in between ki kichi question thila jodre okay Dodabetta, Anaimodi, Gurujikhar. Okay. Dubbat. Okay. These are all related to peninsular mountains, right? So, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟନ ବାଲା ରିଜନ ଶେଷ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ହିମାଳୟନ ରିଜନ ର ଯେତିକି ମାଉଣ୍ଟେନ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ ଶିବାଲିକ ରେଞ୍ଜ ହଉ ୟା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେଗୁଡା ହଉଛି ଶିବାଲିକ ରେଞ୍ଜ ର ରାଇଟ ଆଣ୍ଡ ମେଘାଳୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରହିଥ ମୁଁ ଏଟା କରିଛି ମେଘାଳୟ ପଡେ ଗଲା ମେଘାଳୟ Okay. मेघालय रो गारो खासी जयंतिया ठीक अछि गारो खासी जयंतिया बट दीज आर नॉट फ्रॉम हिमालय like ako mu sibalik himalaya से तो काउंट करबेनी बट दिस इज लाइक ए फॉल्ट क्रिएटेड बेसिकली राजमहल आउ मेघालय मझिरे गोटे फॉल्ट क्रिएट हैला सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड मालदा फॉल्ट कोन मालदा फॉल्ट फॉल्ट माने दरार ओके कि गोटे साइड रे गोटे गैप पळे आसला मालदा फॉल्ट दैट इज ए गैप राइट सो बाय गारो एंड राजमहल गैप तो राजमहल हिल्स जो तमे देखियो सेटा जदी तमरो वेस्टर्न साइड रे रहबो देन मझिरे बांग्लादेश एंड एपट साइड रे तमरो रहला गारो खासी जयंतिया मेघालय रो तीनटा गारो खासी जयंतिया बट नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन इज दैट क्लियर काले जदी क्वेश्चन आसियो गारो खासी जयंतिया पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन आंसर इज नो दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालय रीजन बट दे हैव क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ द मालदा फॉल्ट कहा लगी मालदा फॉल्ट होप इट इज फाइन not from Himalaya, Garo Khasi Jaintia. They are separated. Now, these are now app or to तमु जेतले तळुक आसीबा फॉल्ट परे पेनिनसुलर इंडिया ओके तो बर्तमान मते कुह कि जेति कि हम बर्तमान देखिले ता भितरे किछि डाउट अछि कि सो पासेस वी कवर्ड माउंटेन रेंजेस वी कवर्ड फॉर हिमालयन रेंजेस ओके हिमालयन तो हिमालयन रा फर्स्ट चारटा कि कहबो ट्रांस ग्रेटर लेशर आउ शिबालिक नाउ जदि क्वेश्चन आसी गला कि भाई माउंट इसो जोटा सेटा ग्रेटर हिमालय रा पार्ट इज दैट करेक्ट नो सर No, sir. it will be part of Shivalik am I right okay kali jodi question asila abor it is a part of greater Himalaya is that correct abor नो सर no because in greater Himalaya from Arunachal Pradesh we studied only two mountains right one is Kangto the other one is Namcha Barba. Namcha Barma तो আজি मु आउ आगु को जिबाकू चाहूनी पेनिनसुलर पार्ट बट एटलीस्ट एतिकी ठीक अछि ना एतिकी एटलीस्ट ठीक अछि एटलीस्ट सी मु जानि छि तुम माने ऑलरेडी जानि छ बट आज आउ टिके फील हेतु कि अच्छा आ सहित कोटा कहार लेसर हिमालय रो कोटा ग्रेटर हिमालय रो कोटा बर्तन टिके
आखि सामना को आस्ते करेक्ट नो सी मोर तो आखि सामना को आसला मु भी 2-3 थर करछि बट एते डिटेलली भी मु भी केबे करिनी कि हां ट्रांस रो कोटा लेसर रो कोटा ग्रेटर रो कोटा सी बालिक रो कोटा तागरो मु जस्ट करि देछि बट मु जानि छि कि कोठी कोन अछि बट जति काली क्वेश्चन आसिला कि कुमायून रीजन इट इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय इज दैट करेक्ट No, sir. so Kumaon is part of which region trans or greater or lesser of Shivalik Sir, less, sir. lesser first of all Kumaon देखा जिया दरकार कि भाई दिस इज इन उत्तराखंड जहां सहित आहुरी दीटा थिला ता ना थिला नागती बाउ मसूरी बट एमान को मु लेसर रे पढितली लेसर हिमालय रे हां कि नहीं चलो that level of understanding we have now so if any kind of question on Himalayan region or mountains asibo at least we can handle it right you have the assurance that you will able to handle it सेठी आ एक्सक्यूज चलिबनी कि नहीं सर हमें पढी नथलु कोठु पळे आसला जणा ही पडला नहीं से सब सिचुएशन नहीं ओके पासेस ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो कि अगिल कोठी काराकोरम कोठी लनकला छागला निसला मननितिलिपु देन नकुला नथुला जलेपला करेक्ट ओके नहीं किसी तो बोमबडी सिला दीपोरविल से पास योंगयांग पास तुजू पास हल्दीघाट पास पालघाट बाल देन बोर देन थालघाट and Sengotai. This is the passes what I mean done. Chalo, thank you everyone. Now we will focus on not thank you everyone in the sense I am not stopping the class. I will go to the revision right physical geography. So yesterday we discussed on the part of which one latitude वाला concept right latitude sorry longitude वाला concept रे हमें खाली से plane वाला concept करथिले time वाला series वाला देखिथिले कि कोठी केते time हबो right our next concept is कि जदि latitude रे change आसिला and काली हमें कहउथिले कि मते तमे को जदि मु किछु क्वेश्चन पचारबे कि लाइक सबुठु maximum distance between two longitude it is happening at the pole the statement is true or false false so maximum distance between 2 point को जगह हबो between 2 point in longitude कोठी हबो तमरो इक्वेटर रे maximum distance हो अराउंड केते किलोमीटर सेटा पते हमें देखि नथिले बट लैटिट्यूड रो दीटा भीतर डिफरेंस थिला 111 किलोमीटर ट्रू दीटा लैटिट्यूड भीतर डिफरेंस जनरली 111 किलोमीटर मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस हाउ मेनी 179 very nice 179 okay now the time zone is based on the latitude of a point is that true false sir. seasonal changes happens due to longitudinal of one of the places longitude of the place seasonal changes false okay. False, sir. Now coming to this false yeah very nice so now the concept is we talked about latitude longitude now the concept is seasonality तो जेतला हमें कहू कि भाई seasonality it's because of what now there is a rotation because of rotation we are having day and night this is related to longitude यार थ्रो रोटेशन होची बोली जो लॉन्गिट्यूड रे सूर्य रहउचंदी सेठी गोटे टाइम रहउची देन जो लॉन्गिट्यूड रे सूर्य रहउनांदी बेस्ड अपॉन दैट वी हैव टू गिव लाइक प्रति 15 डिग्री रे घंटे रो चेंज राइट और प्रति 1 डिग्री रे 4 मिनिट रो चेंज सेही अनुसार हमें आगो पछ करथले आगो प्लस करथले पछू गले माइनस करथले एनीवे बट जदी अर्थ रिवोल्यूशन करूची बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन रोटेशन रे कोन होची डे नाइट रो चेंज होची लॉन्गिट्यूड पर्सपेक्टिव रे बट बिकॉज ऑफ अर्थ रो रिवोल्यूशन तो जदी तमे देखिवो अर्थ जेतले रिवॉल्व करूची करेक्ट नो तो से तो सब बेले एक्सिस मेंटेन करबो केते डिग्री रे बेंड हेकी अछि 23 एंड हाफ डिग्री रे करेक्ट नो सो जेहेतु बेंड हेकी अछि तो बर्तन देखो सूर्य एठी अछि तो बर्तन इक्वेटर तो एमिति थिबो ए पोर्शन इक्वेटर एमिति थिबो ए पोर्शन इक्वेटर एमिति थिबो ए पोर्शन इक्वेटर एमिति ही थिबो तो तमे एठी कहि परिबो ना जेतेले अर्थ रो पोजीशन एठी अछि सदर्न हेमिस्फीयर रे अधिक खरा हबो हंगे नहीं ट्रू जेतेबेले अर्थ ए पॉइंट रथि पेरिसी पॉइंट रे सेतेबेले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे सबटु अधिक दिन रहिबो हंगे नहीं करेक्ट जेतेबेले अर्थ ए पोजीशन रे थिबो सदर्न हो या नॉर्दर्न हो दिन राति समान रहिबो आइदर ए पोजीशन हो या फिर ए पोजीशन हो हंगे नहीं बर्तन जदी मु कहबी कि पोजीशन रो मु डेट डिसाइड कर परबे ना नहीं लगभग ए पोजीशन it is related to December this position
is related to, I can say June or July. I will say July. June. Sorry, June. This position is March and this position is September. हवा ना हवा नहीं. Fine. ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ. ଠିକ ଅଛି. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, because there is a tiltation, that's why we face, there is a south ରେ, ଏଟା already କହିଦେଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ. Then now the concept is, because of this the geography we have to study, because earth tilt ହେଇକି ରହି ଯାଇଛି, ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି ଆମକୁ geography ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି. ନା geography ରେ କଣ ପଢୁଛେ ନା there will be temperature variation. because କାହିଁକି temperature variation କି ଯଦି ଭାବ ଡିସେମ୍ବର ରେ ଯେତେବେଳେ earth ଏ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି, ତଳ ପୋଜିସନ ରେ ଅଧିକ ଖରା, ଯେହେତୁ ତଳ ପୋଜିସନ ରେ ଅଧିକ ଖରା ଉପର ପୋଜିସନ ଅପେକ୍ଷା, ତ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ ଯଦି ଶୀତ ଲାଗିବ, ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ କଣ ଲାଗିବ, ଗରମ. करेक्ट नो. दैट्स व्हाई जेतले डिसेंबर आमे कहूचे कि आम पई हेटा होची शीत दिन, किंतु ऑस्ट्रेलिया पई हेटा खरा दिन. दैट्स व्हाई एसआन कहउछन ना कि डिसेंबर 25 बड़ दिन. काहे बड़ दिन भाई, हेटा ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव में तांको पई हेटा बड़ दिन. आम पई थोड़ी बड़ दिन सेटा, आम पई तो सबटु छोटो दिन सेटा, हां कि नहीं, दिनटा तो सबटु छोटो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे. करेक्ट. ओके. So there is a temperature variation because of the earth revolution. Now there is a ITZ shifting also. करेक्ट नो. ITZ रो शिफ्टिंग केमिति हि जिवो ना, जदी तमे कहबो कि भाई सूर्य जो एरिया को जीवो से एरिया रे तमरो जो प्रेशर बेल्ट अछि सेगुडा शिफ्ट होवा स्टार्ट कर दबो, जोडा आगु का में देखबा क्लाइमेट रे, क्लाइमेट चेंज रे इशू आसी जीवो, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होबो, रेनफॉल रो पैटर्न चेंज होबो, जते अधिक जो एरिया रे खरा होबो से एरिया रे सेते लो प्रेशर होबो एंड सेते अधिक वर्षा होवार चांसेस अछि. डे एंड नाइट रो जो लेंथ अछि 12 घंटा वाला, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तार कांसेप्ट ही नहीं, बिकॉज़ टिल्ट हेक अछि. तो बर्तन को बिकॉज़ ऑफ द टिल्ट जदि हेई न थांदा ताहले ए सब किछि दिन सही न, जदि अर्थ पूरा, इफ नो टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, जदि अर्थ टिल्ट ही न थांदा बाय डिफॉल्ट सब बेले सेम पोजीशन रे थांदे. करेक्ट नो. एठी भाबिनियो एटा टिल्ट ही हेनी, तो टिल्ट हेनी जदि मु एठी भी एमिति मारिबी, एठी भी मु एमिति मारिबी, एठी भी मु एटा को भी सीधा मारिबी, इक्वेटर तो सीधा ही रहबो ना, टिल्ट ही हेनी. तो दिन 12 घंटा राति 12 घंटा हिता माने, जो तमे कहजो बड़ दिन वाला से कांसेप्ट आसी ही न थांदा. टेम्परेचर वेरिएशन है नथांदा, आईटीसीजेड शिफ्टिंग है नथांदा, काहे के थांदा सब दिन आईटीसीजेड शिफ्टिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह रीजन किछि नथांदा. सब बेले आमे जानले इक्वेटर रे सब बेले वर्षा हो, अलग रीजन रो फरक पड़नी से जहां होथाउ. करेक्ट. सो because there is a tilt, that's why we are studying temperature variation, that's why we are studying ITCZ shift, we are studying climate change, we are studying pressure belt, we are studying rainfall pattern, and we are seeing the day and nights are not 12 hours exactly. Either day will be bigger, night will be shorter, or night will be bigger, day will be shorter. Any doubt? Clear? Okay. Next concept. If the rotation itself will stop, this is related to revolution. कि सूर्य चारिपटे अर्थ बुलुची या फिर सूर्य अर्थ चारिपटे बुलुची, व्हाट आई हैव टू से, अर्थ सूर्य चारिपटे बुलुची या सूर्य अर्थ चारिपटे बुलुची, अर्थ सूर्य. that's why we call it as revolution. Okay. If the rotation stops, because of the rotation there is Coriolis force, because there is Coriolis force there is wind deflection. हाँ कि नहीं, रोटेशन होची बोली Coriolis force लागुची, जोटी तमे इक्वेटर रे Coriolis force केते 0 और मैक्सिमम सर 0 सर 0. तो किंतु सबुठो अधिक स्पीड कोठी जदी तमे जदी ठिया आबो कोठी पूरा पोल रे, हेडु देखो दल दल करी बुलुथबो, किंतु एटा बहुत स्लो चलथबो इक्वेटर रे, जणा ही पड़नथबो. सो सबुठो मैक्सिमम Coriolis force कोठी, पोल रे. तो पोल रे जदी Coriolis force अधिक, बेस्ड ऑन द Coriolis force तमे क्लाइमेटोलॉजी रे पढिथिबो कि नॉर्दर्न रे जेतेले गोटे तळु ऊपर को जाय से राइट साइड को बेंड हबो, ट्रू, बिकॉज़ ऑफ द Coriolis force. जदी सदर्न रे देखिबो जदी गोटे तळु ऊपर को जाउदी से लेफ्ट साइड को बेंड हबो, because of the Coriolis force. तो भाबो हठात रोटेशन ही होनी, जदी रोटेशन हो बनी देन Coriolis force भी नहीं, जदी Coriolis force नहीं देन विंड रो डिफ्लेक्शन भी होबार नहीं, देन तमे मानसून केमति पडियो, क्लाइमेट चेंज केमति पडियो तमे. करे नो. तो विंड डिफ्लेक्शन जदी स्टॉप हैला, विंड रो डायरेक्शन भी चेंज होबनी, डायरेक्ट विंड जेमिति जिवा कथा सेमिति ही जिवो, स्ट्रेट स्ट्रेट जिवा कथा से स्ट्रेट जिवो. आउ से जो एमिति बुल्ली जाउतिला नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून, तार कांसेप्ट ही नहीं भाई. नॉर्थ साउथ नॉर्थ पडियो डायरेक्ट, नॉर्थ साउथ ये सब कांसेप्ट नहीं, डायरेक्ट आसीबो इंडिया रो सीधा कोरमंडल रे पसिबो कोठी तमिलनाडु एंड सेपटे जम्मू कश्मीर देखि हेठी जाई बाडे हबो. तो भाबिनो फॉरगेट अबाउट दिस वेस्टर्न बेल्ट, से कोस्टल बेल्ट तो बंजर हे जिवो. काहे की बिकॉज़ हबो ना कि बर्तन जदी तमरो समहाओ
भाविनियो डिफ्लेक्शन नहीं देन बर्तमान जो पवनटा आसीबो से पवनटा ई पटे जीवो लेट सपोज पूरा स्ट्रेट होंगी नहीं देन ए पटे मोर पहाड़ अछि एपटे मते सब चिल्लीर अवस्था देखा जाय चिल्ली पेरू वाला अवस्था काहेकि ये आर पवन नहीं जीवो एपटे बाडे दबो एठी पहाड़ अछि देन एपटू ये खसी की जाय परबे ये तो डिफ्लेक्शन होबार चांसेस ही नहीं अछि की चांसेस कोरियलिस फोर्स नहीं डिफ्लेक्शन काहे हबो से तार स्ट्रेट फॉरवर्ड चलला जे पन एठी गोटे सतपुरा रेंज आसीबो विंध्याचल रेंज आसीबो हेठी बाडे की एपटे वर्षा एपटू काउ न जाई पारे देन एपटे बंजर प्लेन एरिया करथा पानी लगे की बुझे परतो ना बुझे परनो okay so if there is no rotation there is no deflection will stop because of the deflection will stop there will be stop of wind direction and जदि wind direction stop हैला climate change भी stop हो जो भाई meander formation meander जो तमरा जो नदी करेक्ट नदी आसी चेंज से गुडा हबो ही नहीं केबे हो नदी बोही बोही गोटे लाइन रे बोहीबो wind तो गोटे डायरेक्शन रे बोहुछु करेक्ट desert location will also change that's what I am saying no कि बर्तमान तमे भाबो एठी जो अरावली रीजन रे जो तमे एठी कहू राजस्थान रे डेजर्ट एतना मु तो कहू ए सब तक रीजन बर्तमान डेजर्ट रे तांदा काई ना एठी ईस्टर्न घाट अछि एई पटे वर्षा हबो ए पट साइड रे केबे वर्षा ही होनी पवन कुआडे आसीबो जे पटे वर्षा हबो क्लियर सो सैंड ड्यून रो जो स्टेज अछि सैंड ड्यून जोडा हम लैंडफॉर्म रे अगेन पढिबा लैंडफॉर्म रे जो सैंड ड्यून पढिबा कि वर्षा पवन एमिति आसुची देन किसी सैंड ड्यून एमिति तयारी हबो ए पट टाइम दी खसडा थिबो एंड ए पटे सब गदे ही जाउथबो करेक्ट बरखांस वगैरह से गुडा हमें देखिबा सेथिरे जेतले लैंडफॉर्म पढिबा बट ठीक अछि तो एटलीस्ट सैंड ड्यून रो भी पोजीशन चेंज हबो ओशन करंट सेटा भी चेंज हो इंपैक्ट ऑन साइक्लोन फॉर्मेशन से गुडा भी चेंज हो होल ज्योग्राफी ही चेंज हो जदि तमरा रोटेशन और रिवोल्यूशन एक गुडा गड़बड़ है वाला हां कि नहीं तो बुझा पड़ुची कनेक्शन फाइन नाउ कमिंग टू दिस पोजीशन राइट बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशन बिकॉज़ हमको सीजनलिटी देखियार अछि तो सीजनलिटी पे इंपोर्टेंट फैक्टर जदि कहा जिवो फास्ट होती तो रोटेशन और रिवोल्यूशन ए दिटांग हबा दरकार जदि ए दिटांग नहीं भाई सीजनलिटी भी नहीं एनी डाउट इन दिस अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन जदि ठीक ठाक न होला जदि इंस्टेड ऑफ अर्थ जो टिल्टेशन जदि से टिल्टेशन न होई कि जदि से पूरा स्ट्रेट थांगा देन तो मते कुह तमे आईटीसीजेड शिफ्टिंग वाला से सब कांसेप्ट ही पढि न सीजनलिटी फॉरगेट अबाउट इट जदि अर्थ रिवोल्यूशन जदि रोटेशन ही स्टॉप हो जाता कोरियोलिसिस फोर्स ही स्टॉप देन तमे जो विंड कथा कहउछ ना से जो जहां जहां तमे पढुछ सेगुडा सब आउ को उठी पढुता एनीवे नाउ कमिंग टू दिस वी आर हैविंग इंडिया इट इज समवेयर इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड काली ही हमें कहउतले कि 23 अधे को स्टेट दे जाईची मते आउ थरे को 23 अधे को स्टेट दे के जाईची गुजरात राजस्थान गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम त्रिपुरा एंड मिजोरम वेरी नाइस नाउ जदि तमे बर्तमान देखिबो कि चारिटा लोकेशन मु कहउती को चारटा लोकेशन जदि मो पाखरे एठी सूर्य रहिले देन आइदर पृथ्वी एपटे थिबो नहले पृथ्वी एठी थिबो नहले एठी थिबो नहले एठी थिबो ट्रू तो फर्स्ट लोकेशन जेतले पृथ्वी एठी अछि तो एठी सबुठु अधिक को एरियाटा सूर्य को मुहाई जे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करेक्ट तो ए टाइम टा को मन होची जून 21 सिंपल आगो जून मारो एठी एटा मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर एति कित पय मार दियो देन 21 देन डिसेंबर 22 सितंबर 23 कोन कहली 21 22 23 हबो ओके मिनिमम एति कित दरकार एति कित तमे कर दबो नाउ से पर्सपेक्टिव रे बर्तन मु पळेबी कि गोटे ग्राफ को कि जदि जून 21 हैला जून 21 माने बर्तन पृथ्वी अछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नियर टू द सन दैट मींस दिस इज द पेरिजी पोजीशन बिकॉज़ इट इज ए इलिप्टिकल ऑर्बिट जो थरे पृथ्वी चारिपटे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बोलुची पेरिजी पोजीशन रे दिस इज पेरिजी पोजीशन दिस इज अपोजी पोजीशन राइट सो पेरिजी पोजीशन रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे सबुठ अधिक गरम होबो एंड द टाइम पीरियड होची जून 21 जो ठिकी 23 अधे डिग्री टा स्ट्रेट फॉरवर्ड सूर्य मुहाई की थिबो तो सूर्य जून 21 रे कोठी थिबे 23.5 डिग्री नॉर्थ रे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट नो तो सेठी मैक्सिमम टेंपरेचर होबो सेठी दैट्स व्हाई द लोकेशन ऑफ द सन इज ऑन कैंसर देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज कॉल्ड समर बट इन साउदर्न इट इज कॉल्ड विंटर एंड जदि समर हैला डे अधिक नाइट छोटो नॉर्दर्न पोल रे 6 मास ये जो फर्स्ट 6 मास कोठू ना मार्च रु जेतले सूर्य उठिबा स्टार्ट हेबे को आडे ना 23.5 को जिबा पई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मुहाई के रहबा कहा पटको ना सूर्य पटको तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रो जो पोल नॉर्दर्न पोल 6 मास दिन
देन जेतले से खसी जिवे कोठी की मार्च रु सेप्टेम्बर पळेला सेप्टेम्बर रु मार्च पई नॉर्दर्न पोल रे 6 मास राती एनी डाउट नॉर्दर्न पोल रे 6 मास दिन को पोजीशन रे ना मार्च रु नै की सेप्टेम्बर रु नै की मार्च जाए 6 मास राती क्लियर आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइट आ विषय हेते बेसी किछि जानिबार नै ना तुमको कोठी लागुछि कि नै कोठी ओके ठीक अछि आ गोटे डाउट थाए कि सेप्टेम्बर 23 रे आमे जानले कि सूर्य इक्वेटर रे थिवो सेप्टेम्बर 23 आ मार्च 21 रे सेप्टेम्बर 23 मार्च 21 सूर्य थिवो इक्वेटर रे तो जदी इक्वेटर सेप्टेम्बर को आमे कोन कहूजे ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पई ताको आमे कहूजे ऑटम सीजन एंड जदी आमे कहबा मार्च रे ताको आमे कहूजे स्प्रिंग बसंत ऋतु हमको खरा ऋतु पूर्व सेटा आमे बसंत ऋतु सेटा नॉर्थ रे आमे कहूजे केबे ना मार्च मास रे देन पत्र झड़ा वगैरह चलियो सर राइट तो मार्च मास होची बसंत ऋतु कोठी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे एंड सेप्टेम्बर रे सेटा आमे कहूजे ऑटम करेक्ट इक्विनॉक्स इक्वेटर रे जेहेतु सेमान रहउछन ताको आमे कहूजे इक्विनॉक्स देन देयर इज समथिंग कॉल्ड समर सोलिस्टिस कि जून 21 रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे समर सोलिस्टिस हुए डिसेंबर 22 रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंटर सोलिस्टिस हुए किंतु सदर्न हेमिस्फीयर रे समर सोलिस्टिस हुए कि खरा को ठीक अधिक होची करेक्ट नो से पर्सपेक्टिव रे जून 21 रे 23.5 डिग्री नॉर्थ रे सूर्य डायरेक्ट अछि दैट मींस खरा तो सबटु अधिक होबो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज समर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट जदि मु कहबी डिसेंबर 22 कथा डिसेंबर 22 रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे सूर्य सबटु दूरे की अछंती बिकॉज़ सूर्य तो सदर्न हेमिस्फीयर अछि तो डिसेंबर 22 टा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे मु कोन कहबी विंटर सोलिस्टिस इज दैट क्लियर ओके तो मते को लैटिट्यूड रे किछि कार डाउट अछि लैटिट्यूड रिलेटेड रे जो बर्तन चेंज हला सिचुएशन कि धीरे धीरे खरा हबो देन वर्षा काहे के हबो सेटा त आगु आमे जिबा क्लाइमेट रे जेतले पडिबा काहे ना से पानी ततई जिवे पानी ततई गला बेलको देन से माने आसी वर्षा करेबे दैट इज वन थिंग नाउ कमिंग टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ नाउ ज्योग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री थिंग्स one is your lithosphere one is your atmosphere and one is your hydrosphere correct no so lithosphere is related to how the formation of the soil right soil केमती आसिला then landform वगैरह केमती तयार होला नदी बदी ए सब तो तमर lithosphere रे पड़ेबो atmosphere रे तमर कोन जीवो troposphere stratosphere cloud cloud formation वगैरह again करेक्ट से गुडा सब तमर atmosphere रे पड़ेबो hydrosphere रे water related कि भाई पानी भीतर कोन चलछि तो कथा होची एठी जो इंटरसेक्शन पॉइंट ना ए इंटरसेक्शन होची तमरा कॉल्ड बायोस्फीयर बायोस्फीयर so once you understand geography then you go to this intersection position this is what we called environment any doubt lithosphere atmosphere hydrosphere ए तीनटा जतले मिसिबे एटलीस्ट गोटे जीव बंचिबा संभव ए तीनटा को गोटिए काटि दियो जीव बंचिबा संभव करेक्ट नो तो जीवा बंचिबा सदै बेले संभव जेतले से इंटरसेक्शन पोजीशन ले जाबे सेहि पई ताको हम कहते बायोस्फीयर लाइफ पॉसिबल देन लाइफ पॉसिबल दैट्स व्हाई एनवायरनमेंट फाइन चलो so our first focus if you see your geography book also that is been divided in these sections first 11th class physical geography जो तमे देखो लैंडफॉर्म विषय ही चर्चा देन एटमॉस्फेयर ऊपर ही चर्चा देन हाइड्रोस्फीयर ऊपर ही चर्चा आउ जदी मु कहबी कि भाई मु फास्ट ओशेनोलॉजी रो स्टार्ट करबी दैट इज नॉनसेंस केमिति भाई ओशेनोलॉजी रो स्टार्ट करबी जे पद तमे अबिजाल प्लेन विषय जाननो लैंडफॉर्म से तो से टच हिची मु लैंडफॉर्म विषय किछि न कहि कि ओशेनोलॉजी रो मु केमिति स्टार्ट करबी क्लियर फास्ट कथा होची मते जाना पड़ियो कि भाई लैंड केमिति फॉर्म होला से वोल्केनो उडा आसिला कोटो भीतरे तो किछि अछि जोथि माने बाहर को आसिला देन सेटू ठंडा है कि कूल डाउन है कि लैंड हेले करेक्ट नो होंगे नहीं चलो so here if you see anyway you already know it so let's discuss little bit कि बर्तन तमे जदी कहिबो कि गोटे होची continental crust thickness see I am going to discuss from the PYQ perspective the thickness of Sial au Sima thickness of continental crust और thickness of oceanic crust कहार सबटो अधिक thickness continental continental crust correct no कॉन्टिनेंट correct continental crust ro thickness बहुत अधिक rather than oceanic crust very important point now the thing is concept astuchi there is something called crust right so basically if you see this is what we called crust then जदि मु ताको just level 1 रे बुझेबी अंगनवाड़ी लेवल रे so there is something called earth रो मु जतले interior कथा पढेबी earth रो interior रे first तो there is something called core okay forget about further classification level 1 अंगनवाड़ी level first होची core then तमरा आसुची कोन mantle then तमरा आसुची crust is that clear crust mantle core
तो क्रस्ट जोटा हमें कहूचे कि सियाल और सीमा बिकॉज ए क्रस्ट रे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थाई पारे ए क्रस्ट रे ओसेनिक क्रस्ट थाई पारे फाइन ओके तो कॉन्टिनेंटल का पहाड़ पहाड़ वगैरह हे गला देन हठात ना एठी हे गला अबिजल प्लेन देन एठी तमरो पानी अछि then that means your सीमा will start from here correct no this is oceanic crust but continental crust तो ये सब तक तो सेति हमें कोन कहले continental crust रो thickness अधिक rather than oceanic crust so thickness of continental crust thickness of CL is more than the thickness of सीमा or oceanic crust any doubt in this okay now why there is a formation the formation happens due to endogenic force endogenic means भीतरु एक्सोजेनिक नो मींस एमिति नो कि बाहरु किछि गोटे जाना पड़ला कि पृथ्वी रे वर्तमान जो कंटिन्यू हिमालय जो तयारी हेछि बिकॉज़ चंद्र टाणी कि नो माटी टाकू चंद्र टाणुछि चंद्र ग्रेविटी लागी हिमालय तयारी हेछि एमिति थोड़ी दैट वुड बी बिकॉज़ मोस्टली रिलेटेड टू एक्सोजेनिक राइट what I am saying is it is endogenic force means भीतरु निज भीतरु हि किछि गोटे हो राइट दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अपवर्ड मूवमेंट कि गोटे कॉन्टिनेंट अछि एपटे गोटे कॉन्टिनेंट अछि ए दिटा बाडे हि गले हठात किना ए जो पोजीशन ता अछि एटा तो अपलिफ्ट कर जिवो राइट कॉन्टिनेंट बाडे गले अपलिफ्ट कर जिवो गोटे ओसेनिक क्रस्ट अछि एंड गोटे कॉन्टिनेंट अछि ओसेनिक क्रस्ट भितरु गला देन वोल्केनो बारला देन एठी गोटे अपलिफ्ट हे जिवो माउंटेन गोटे तयारी हे जिवो right so the formation will always happen in earth crust जेतले formation होची it is because of endogenic force not because of exogenic force that is clear right then the next concept from PYQ कि प्रति 32 मीटर जेते तळे तमे तळकु जीव सेते 1 डिग्री सेल्सियस रा टेंपरेचर बढ़ी चलिबो फाइन now in higher level if I'll go little bit ahead कि ठीक अछि 12th वाला पर्सपेक्टिव जदी को देखबी then I will further classify so simple मो जो क्लासिफाई करतली ऊपर टाको मु कोन कहतली क्रस्ट कहितली then तार नेक्स्ट लेयर टाको मु कोन कहतली मेंटल कहितली तार नेक्स्ट लेयर टाको मु कोन कहतली कोर ओके लेट्स डू फर्दर सेग्रीगेशंस कि जो क्रस्ट थिला ताकू वर्तमान मु कहबी कि भाई आई विल डोनेट एज अ लिथोस्फियर तो लिथोस्फियर जनरली मु कहबी कि अप टू 100 किलोमीटर जाय ताकू मु लिथोस्फियर कहबी अप टू 34 किलोमीटर फ्रॉम द टॉप रु 34 किलोमीटर जाय मु ताकू क्रस्ट कहबी बट फ्रॉम टॉप रु अप टू 100 किलोमीटर जाय मु कोन कहबी लिथोस्फियर 100 किलोमीटर रु लगभग 700 किलोमीटर राइट ताकू मु कहबी कि आस्थेनोस्फियर कोन आस्थेनोस्फियर मींस मेंटल रीजन को बर्तन पळे आसी 100 रु तळु गली माने मेंटल सो मेंटल रो जोटा आउटर मेंटल राइट जोटा कि पृथ्वी रो लाइक एटमॉस्फेयर पट को जोटा क्लोज जोटा पृथ्वी रो बिकॉज़ एटमॉस्फेयर एठी अछि तो एटमॉस्फेयर को आउटर मेंटल जोटा ताकू मु कोन कहूची आस्थेनोस्फियर ता तळे अछि कोन मोर मेसोस्फियर केते किलोमीटर जाय ना 700 रु 2900 इज दैट क्लियर लिथोस्फियर देन आस्थेनोस्फियर देन मेसोस्फियर देन इनर कोर जोड़ा अछि गोटे होची इनर रे दिस इज इनर कोर दिस इज आउटर कोर कोर रे बाहर पटटा जोटा अर्थ पट को एटमॉस्फेयर पट को दैट इज आउटर कोर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर कोर तो आउटर कोर जदी मु कहबी कि 2900 रु 5100 किलोमीटर जाय एंड जदी मु कहबी इनर कोर दैट इज 5100 किलोमीटर रु 6378 किलोमीटर जाय एनी डाउट इन this is clear right okay the next concept is in this mantle there are lot of radioactive metals and radioactive metal means they are hyperactive जदि से माने active अछथि then से माने किछि ना किछि रिएक्शन चालू हेतिबो because of the reaction there will be too much of energy generation because of too much of energy generations they cannot stay in because there is high temperature right energy asला माने टेम्परेचर बढ़ियो and टेम्परेचर बढ़ियो माने मेल्ट आउट से माने मेल्टिंग दिबे हंगी नै जदि से माने मेल्ट हेले then सेमी सॉलिड रे रहिबे से माने तो मोस्टली इफ यू सी आस्थेनोस्फियर सेठी रहइबो सेमी सॉलिड आ जदी किछि जिंस सॉलिड रे अछि से माने आसीबे मेसोस्फियर काहेकि ना किछि जिंस अछि जोटा कि सेति टेम्परेचर रे से माने मेल्ट हेई ही नांती दैट मींस सॉलिड जे थिबो से तो तळकु ओजोनिया थिबो ओजोनिया हेले तळकु आसीबो हंगी नै ग्रेविटी तो एठु आसीबो ना ग्रेविटी तो एठु आसीबो एमिति न कि ग्रेविटी एपट को टाणुची एमिति एपट को टाणियो कि ऊपर को भीतर जो जिंस जणा पडला कि सर वोल्केनो काहे कि पडू हमें ग्रेविटी द्वारा तो से माने पळे आसीबे ग्रेविटी द्वारा ऊपर को आसीबे कि जाने आसीबे नि राइट तो ग्रेविटी तो सब तळे ही टाडियो तो mg will be always downward towards the center of the earth right anyway so बर्तन को गोटे सेमी सॉलिड अछि गोटे सॉलिड अछि कि ग्रेविटी द्वारा तळकु थिबो obviously solid right that means जदि मु कहबी कि आउटर मेंटल आउ इनर मेंटल
कोटा सॉलिड थिबो कोटा सेमी सॉलिड थिबो सर ऊपरटा थिबो सेमी सॉलिड और तळटा थिबो सॉलिड बाय डिफॉल्ट नो बिकॉज ग्रेविटी रो कांसेप्ट लागिवो एठी सॉलिड जोडा थिबो तळକୁ आसीबो सेमी सॉलिड जोडा थिबो जोडा ऊपर रहिबो ओके then if I'll go to core रे now the concept is we don't know what is core जोडा कि जोथि पे हमें कहबे कि सी कथा होची या विषय तमे जानिबो केमिति या विषय जानिया कहले तमको दरकार कोन से जो एस वेव आ पी वेव रो कांसेप्ट करेक्ट नो तो जदि तमे बुक पढिबो से जानिबो कि भाई एस वेव आ पी वेव रो कांसेप्ट दरकार देन एस वेव आ पी वेव को से माने चेक करियो कि भाई वेयर आई एम गेटिंग इज दैट ओजन तो एंड एस वेव रो प्रॉपर्टी कोन पी वेव रो प्रॉपर्टी कोन पी वेव पळौची कि एस वेव जाई पारो कोथिरे ना केवल एस वेव सॉलिड रे जाउची आ कोथिरे जाई ही पारुनी बिकॉज़ आ कोथिरे जाई पारुनी दैट मींस देयर आर सम अदर एलिमेंट्स व्हिच आर बीइंग प्रेजेंट इन अर्थ इंटीरियर करेक्ट नो एस वेव ए जाय गला आ तापरे आ जाउ नै बिकॉज़ इट इज सेमी सॉलिड पळे आला ना द कांसेप्ट इज कि जेतले तमे सेटा पढिबो ना से जो ई जो जिंसटा हेटी मु कहिबी कि ए भितर काहेंगे गैस रही परिबोनी बिकॉज़ ए जाय कि जाईची कि सर्च करिया पे 2900 किलोमीटर भीतर जाई कि किए देखिछि कि देयर इज अ लिक्विड नॉट गैस व्हाट डू यू थिंक के देखिथिबे कि जाई कि 2900 किलोमीटर भीतर को बिकॉज़ वी ऑलरेडी स्टडीड कि प्रति 32 मीटर तळକୁ गले 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर रेज होते दैट मींस जदी एठी शून करबी एठी शून करबी एठी शून कले एठी शून करबी दैट मींस 3200 मीटर मींस 3 किलोमीटर 200 मीटर करेक्ट नो 3 किलोमीटर गला बेलू एठी 100 डिग्री सेल्सियस रेज जाई छी फॉरगेट अबाउट 3200 बर्तमान मु जदी आउ गोटे 3200 किलोमीटर करबे 3 किलोमीटर रे आउ मु ऐड करबी केते ना भाबिने 3000 किलोमीटर आउ तीनटा एठी आउ भी तीनटा जोड़बी दैट मींस लगभग 1 लाख 1 लाख डिग्री सेल्सियस बुझियो ना बुझियो केते डिग्री सेल्सियस जदी मु कहू कि जदी सरफेस रे जीरो अछि सरफेस रे जीरो जते जदी मु 3200 किलोमीटर पळेबी लगभग लाख किलोमीटर लाख डिग्री सेल्सियस थियो तो ऑब्वियसली कही तो यही नथिबे देन से माने केमिति कहले कि दिस इज लिक्विड एंड सॉलिड इंस्टेड ऑफ गैस एंड सॉलिड और गैस और कंप्लीटली गैस रही परिबो कि भीतर ब्लास्ट हो करेक्ट नो हबना माने भाई केते प्रेशर तमे भाबना ए ऊपर प्रेशर पइलानी एंड भीतर गैस रहबो केमिति से गैस रहबो भाई प्रेशर कुकर रे तमे बाहर प्रेशर पकाओ एक्सटर्नल प्रेशर सफिशिएंट प्रेशर पकाओ भाई गैस से ट्राई करो बर्स्ट कर दो एकदम प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो राइट तो एंड अर्थ सेमी रे भी रोटेशन रे भी अछि तो एमिति त न कि तो तमे जो पानी रे भीतर जदी तमे गैस बाहर करियो से ट्राई करियो केमिति संभव बाहर जाय राइट तो ए भीतर केबे गैस तो रही परिबोनी जोति पे हमें कहै ठीक ठीक अछि आउटर साइड रे लिक्विड थिबो एंड इनर साइड रे सॉलिड थिबो कि एमिति किछि एलिमेंट अछि जोति पे कि भाई लाख डिग्री सेल्सियस रे भी जाने मेल्ट होनांती तो से सॉलिड रे ही अछि सो इनर कोर वी आर कंसीडरिंग एज सॉलिड देन you remember hotspot volcanoes those hotspot volcanoes are nothing coming from these inner core hotspot volcanoes बहुत अति थियो hotspot volcanoes inner core रो जेतले लाभा आसीयो ना somehow we call it as hotspot volcanoes सर मेंटल फ्लूम भी कहिता तब mental fume भी कहबा करेक्ट mental fume भी कहबा okay so this is what we understood is कि भाई inner core कथा त हमहु क्लैरिटी पळे आसिला कि सर ठीक गोटे अछि then there is सर जो सी माउंट एटा मेंटल फ्लूम द्वारा भी हेई परिबो हेई परिबो किंतु कथा होची मेंटल फ्लूम रे मोस्ट प्रोबब्ली सेटा तुमको आइलैंड ही देखिबो बिकॉज़ ये एते तळु आसी दियो ता पाखरे सफिशिएंट प्रेशर थिबो सर पॉसिबल कि सेटा भी इरोड हेई जाई पारे ना माने ओशन रो प्रेशर पे सी माउंट इरोड हला पर हमें सी माउंट ताऊ कहने जनरली तमे गोटे हां इरोड हला पर जसे आइलैंड तमे कहू आइलैंड रो इरोड हेई जाई कि सी माउंट होतिबो कि नहीं सर हबनी we don't go into that details कि हां गोटे आइलैंड आगो थिला देन धीरे धीरे पानी आसी कि इरोजन हेई समुद्र पानी आसी बाडे हला इरोजन हेई देन से सी माउंट हला फॉरगेट अबाउट दैट सी माउंट इज लाइक समहाउ से भीतर ही रह गला सरफेस ऊपर को आसी पाइलानी समुद्र ऊपर को आसी पालानी जेति कि ता पाखरे फोर्स थिला से समुद्र भीतर ही रह गला बट जेहेतु माउंटेन हेई अछि लाभा हेई अछि तो लाभा वर्तन ठंडा हेई कि से वर्तन गोटे स्थल भाग बनि जाई गोटे लैंडफॉर्म बनि जाई तो से लैंडफॉर्म रे सफिशिएंट अमाउंट रो तुमको निकेल आयरन कोबाल्ट ई भले मटेरियल मिलबे सेजे हमें कहले कि से जो निटिकिन राइट जो सी माउंट कथा कहउला हमें सेठी कोबाल्ट रिच एलिमेंट्स गुडा अधिक मिलबे आइलैंड रे मे भी तुमको न मिल पारंती बिकॉज़ से माने कोर रु आसुनांती करेक्ट नो मोस्ट प्रोबब्ली से माने आस्टेनोस्फियर वाज जाइबे तो आस्टेनोस्फियर रे तुमको सीमा मिलिबो करेक्ट नो आस्टेनोस्फियर रे मैक्सिमम तुमको सीमा मिलिबो बट कोर रे तुमको कोन मिलिबो निफे मिलिबो आयरन मिलिबो करेक्ट नो ओके फाइन एनी डाउट इन दिस अर्थ इंटीरियर
ओके देन तो सेथिरे आ गोटे थिला CMR गुड लीडर्स राइट C for Conrad M for Moho discontinuity we call it as a discontinuity right कि बर्तन जो हमें कहले कि डिफरेंशिएट तो हमें कर ही देले करेक्ट नो डिफरेंशिएशन ऑन बेसिस ऑफ व्हाट कि भाई अपर क्रस्ट गोटे थिला देन लोअर क्रस्ट कर देले क्रस्ट को ही हमें दी भाग डिवाइड कर देले गोटा होची अपर क्रस्ट आ गोटा होची लोअर क्रस्ट देन मेंटल को हमें दी भाग डिवाइड कर देले कि गोटा होची अपर मेंटल आ गोटा होची लोअर मेंटल राइट आस्थेनोस्फियर एंड मेसोस्फियर देन हमें कोर को ही दी भाग डिवाइड कर देले गोटा होची आउटर कोर आ गोटा होची इनर कोर करेक्ट नो जनरली कोर को हमें कोन कहते बेरिस्फियर ओके बेरिस्फियर नाउ द कांसेप्ट इज कि अपर क्रस्ट आउ लोअर क्रस्ट ता मझिरे जो डिस्कंटिन्यूटी हला मींस वी आर कि तम डिफरेंशिएट केमती करबो गोटे किछि गोटे तो डिस्कंटिन्यूटी बाहर करबो कि भाई ये कंटीन्यूअस रे नांती होंगे नहीं फॉर एग्जांपल मु तुमको गोटे 5 टंकिया बंडल देली से मझिरे गोटे 10 टंकिया नोट ते दे देली देन देयर विल बी अ डिस्कंटिन्यूटी होंगे नहीं कि दिस इज अपर वाला एंड दिस इज लोअर वाला मझिरे गोटे 10 टंकिया नोट अछि so that discontinuity we call as a different name so upper crust और lower crust रो discontinuity को कोन कहला कॉनराड then lower crust और upper mental रो जो discontinuity अछि ताको कहला मोहो 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 कॉनराड मोहो then there is a repeti then gutenberg and lehmann now remember CMR good leader C upper lower correct no then this is related to crust upper crust lower crust then lower crust आउ upper mental भीतर तमर आसियो मोहो upper mental आउ lower mental भीतर तमर पळे आसियो रेपेटी करेक्ट नो then lower mental आउ तमर upper core outer core ता भीतर कोन आसियो गुटेनबर्ग and last को रहला लेहमान जोटा कि outer core आउ inner core भीतर रहला is that clear fine so there might be a possibility of question from this okay fine now कि आर्थर इंटीग्रल विषय जानिया पई मु कहली कि हमको खोजिया पड़िबो कोन ना एस वेव और पी वेव नाउ देयर माइट बी क्वेश्चन फ्रॉम एस वेव एंड पी वेव सो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी वेव एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी वेव नाउ द प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव जनरली द सेकेंडरी वेव्स वी कॉल इट एज व्हाट ट्रांसवर्स वेव कोन कहा जाय सेकेंडरी वेव को ट्रांसवर्स वेव okay and they are the slow waves okay they are the slow waves while the pressure waves they are like expansion and compression sound wave तो जनरली कोन हबो फॉर एग्जांपल एमती चलला then expansion हला then compression हला then पुणी expansion हला then पुणी compression हला so this is what we call P wave but if you see S wave it is like crest and trough these are the crest and trough एगुडा होची ट्रांसवर्स वेव जोटा आसला एस वेव जनरली दिस इज स्लो कहीं ना से ऊपर तळ होची किंतु ये सेमिति बेसी होबार नाही टिके गला देन संगे संगे कंप्रेशन हला सो जनरली पी वेव आर कंसीडर्ड टू बी साउंड वेव एंड प्रेशर वेव ठीक अछि काली जति क्वेश्चन आसी गला प्रेशर वेव इज रिलेटेड टू एस वेव आंसर इज रॉन्ग प्रेशर वेव कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो साउंड वेव कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो बट लाइट वेव there is no compression or expansion there is a transverse the light waves are called S wave is that clear so the direction will be perpendicular to the movement correct no particle जो movement होची for example ए movement रो particle कुआडे होची ना ऊपर को जाउची कि तो डायरेक्शन रो वेव कुआडे राइट साइड को जदि ए पॉइंट रो गोटे पार्टिकल कहबी पार्टिकल रो मूवमेंट कुआडे डाउन कि तो डायरेक्शन ऑफ वेव कुआडे राइट साइड को होंगे नहीं पार्टिकल तो ऊपर तळ होचोनी ना होंगे नहीं बट मूवमेंट होची कुआडे राइट साइड को so that's why the direction and particle movement always in perpendicular but here the direction of the particle generally eta एमिति सिना हमें बनौचे बट एगुडा बहुत नेग्लिजिबल ए माने पूरा छोट छोट होई कि सेही पार्टिकल डायरेक्शन ता हमें मोस्टली नेउ कि parallel direction will be parallel to the movement of the particle that is p for parallel s for s रो तो किछ नै p for parallel रे मन रखिले s रे तमे मार दबो perpendicular हां भाई सॉरी एटा भूली जाओ बिकॉज़ नले p फॉर परपेंडिकुलर भी मारिबो p फॉर पैरेलल न कहूची p फॉर परपेंडिकुलर भी अछि तो परपेंडिकुलर होची s वेव रे s वेव भाई सिंपल जिंस न s वेव तमे देखि दियो कि s जेमिति देखाउची एटा भी सी बळे s बळे ही देखाउची करेक्ट नो होंगी नहीं सो ट्रांसवर्स मींस पार्टिकल जदी ऊपर तळ होचंदी देन वेव रो मूवमेंट राइट साइड होची देन परपेंडिकुलर सिंपल as it is now this is what we call longitudinal waves right this is what we call longitudinal waves ko waves taku na p wave is called longitudinal waves they can travel in solid liquid and in gas also ko wave p wave but in case of s wave which is a light wave it is travel only in solid not in gas not in liquid any doubt
P wave, S wave. Okay. Now the question is, then there is something called surface wave also. So surface wave कि गोटे earthquake खेला बेले गोटे फास्ट P wave आ S wave जनरेट हो से वन सरफेस रे पहुंच गले earthquake कोठ हो भीतर ही हो भीतर किछ गोटे प्रेशर अधिक बिल्ड हो देन सेटू कोन हला गोटे वेव जनरेट हला आइदर इट कैन बी P wave then there will be S wave तो P wave फास्टर ट्रैवल कर जो एंड P wave बहुत जल्दी आसी पहुंच जो कोठी सरफेस रे देन ए सरफेस रे पहुंच गला परे आउ देयर इज नथिंग कॉल्ड P wave S wave P wave and S wave वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर रे देन सरफेस रे जोटा चलेबो ताको कहा जाय सरफेस वेव वी कॉल इट एज लॉग वेव or rayleigh wave. Okay, तो surface wave, these are most dangerous waves. तो सबुठु dangerous wave किए between P, S and the surface wave because they can go for disasters, right? They will create disasters. घर भंगा भंगी ये सब जिंस जहां अछि ना से सब होचे surface wave, either log wave or rayleigh wave. तो ये सब तैयारी जो रॉक डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये पत्थर को से आड़ चेंज कर दियो से बिल्डिंग टा को गड़ाई दियो ये सब होची काम होची सरफेस वेव एस वेव पी वेव बिकॉज़ ये तो पास ही जीव ना कथा से सॉलिड दे की पास ही जाउची किए पी वेव एस वेव भी सॉलिड दे की पास ही जीव किंतु ये सरफेस वेव वाला ये वाला सॉलिड सॉलिड के पास नहीं पीटी देबे नहीं बुझियो ना बुझियो नहीं जदी पास ही जान ताले भी गोटे बिल्डिंग केमती कोलैप्स करंदा गोटे बिल्डिंग अछि एतरे मोटे लेजर लाइट पुरेली एंड लेजर लाइट जाना पड़ला कि एपट से पट हे गला देन बिल्डिंग कोलैप्स हो कि सेतरे तमे कोलाइड कले सिना जदी तमे पास करि पारु ना एंटर करि पारु ना ताले ही तमे कोलाइड करिवो ना हां कि नहीं भाई बुझियो सिंपल कांसेप्ट मु जदी तम देह भीतर पसी कि एपट से पट हे जिवि देन तमको कष्ट थोड़ी हबो किंतु मु जेहेतु हेई पारुनी मु जाकी पिटी हे जिवि देन मुंडा पुंडा पाटिवो करेक्ट नो सो बिटवीन P wave S wave से मान तो सॉलिड देले मूवमेंट कर जिवे जोति नहल तो से माने एठी ए भीतर ही फटे दी तांदे भाई भीतर ही छिन छत्र बिकॉज़ सॉलिड रे से माने पास ही करि पाउना आंदी वेव रो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई अछि एते एनर्जी लेके जाई सॉलिड पास कर पाउनी एठी ही सब क्रैक करके छिन छत्र ब्लास्ट हे ताला हां कि नहीं बिकॉज़ P wave and S wave they pass through solid that's why we don't see any issue and liquid रे एतिक इंटेंसिटी नाही कि S wave सेमित रे भी स्लो वेव करेक्ट नो वी ऑलरेडी स्टडीड दैट S wave इज स्लो वेव सेमित रे भी लिक्विड आउ गैस रे से मूवमेंट ही बंद हे जिवो देखा ही जिवो आउ ताको तो से बेदी की बाहर ही जाई परबो बुझा पड़ुची नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम जोटा कि तम इनसेट रे भी तमो मिलबो तो जनरली सॉलिड जेहेतु मोर डेंसिटी मींस मोर स्पीड P wave जदी तमे सॉलिड रे कहबो ताई बहुत फास्ट चलेबो देन लिक्विड्स आर लेसर डेंसिटी गैस तो आहुरी लेसर डेंसिटी करेक्ट नो सॉलिड रे जोठी पूरा कोन asi पैकिंग एफिशिएंसी को जाय जदी 12th रो जा कार जदी पढिथियो एनसीईआरटी बुक राइट 12th सॉलिड स्टेट ताऊ को जाय पैकिंग एफिशिएंसी केते तो जो क्रिस्टल लाइन गुडा थाए सेगुडा पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड रे बहुत स्ट्रांग थाए बहुत क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी टू क्लोज मींस अप्रोक्सीमेटली 77 99% थाए बट जदी तमे लिक्विड रे कहबो लिक्विड रो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम कि तीनटा एटम जदी अछि देन से तीनटा एमिति अछंदी आ ए सब जगह गैप अछि माने कोन बाय डेंसिटी कम बुझियो ना बुझियोनी जदी तमे गैस कहबो दिस इज सॉलिड रे पूरा एमिति पैकिंग एफिशिएंसी बट जदी लिक्विड कहबो एठी स्पेस अछि बट गैस कहले तीनटा मॉलिक्यूल गोटे एठी थिले गोटे एठी अछि आहुरी सफिशिएंट गैप that's why density is very less in case of gas then if I will say more density from gas is liquid then solid will have very much bigger density jete adhika density sete adhika speed hope it is clear so now if you tell me between P wave and S wave which is more faster P wave which is perpendicular to the direction of the propagation of the wave particles are perpendicular Yes. S wave there is a wave which cannot travel in liquid and gas between P and S. Yes, sir. Between S, P and Rayleigh wave, which is more destructive wave. Really good. Okay. So in light wave, it is considered to be log wave. No, sir. S wave. It is S wave. Sound and pressure wave, those are considered to be S wave. Primary No, waves. sir. Primary wave. Primary wave. Okay. Any doubt in primary, secondary wave, and surface wave?